फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड वेदर में वार्म फज ब्राउनी। चले स्टार्ट करें। So first let's add 16 tablespoon of butter. This is unsalted butter. Keep the heat on the medium flame. 1 cup of semi-sweet chocolate chips. Cook it on a medium flame and cook it until every chocolate chip is melted into a yummy dripping chocolatey sauce. Our chocolate syrup is ready. Let's turn off the flame. Let this cool down for 15 minutes. Take a bowl. Let's add 4 eggs. I got this 4 eggs right outside the fridge. They are cold. If it's cold, if it's room temperature, it's still okay. 4 अंडे जो मैं बीट कर लूँगी इसे भी. Let's add 1 cup of sugar. 1 tablespoon of instant coffee. 1 tablespoon of vanilla extract. 3 tablespoon of oil. Mix everything well. अच्छे से इसे बीट कर लें. देखिए इसे अच्छे से मैंने बीट कर लिया है. In a separate bowl, take 2/3 cup of all-purpose flour, यानी मैदा. Half cup of unsweet cocoa powder. Half teaspoon of salt. 1.5 teaspoon of baking powder. Mix all ingredients well. Mix कर लें इसे अच्छे से. ये रेडी हो गया है. It's already mixed. Let's add the chocolate mixture into our egg batter. Woohoo! Looks yummy. Make sure this chocolate batter is not too hot or not too cold. Mix it really well. Let's add the dry ingredients into our chocolate batter. Let's add all our powdered ingredients. And mix it with a spatula. एक spatula से ही आप इसे mix करते जाएं. ये हमारा सारा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है.
Now let's put this into a pan. मैंने एक बेकिंग पैन ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर लगा के इस पर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, तो आप पार्चमेंट पेपर लगा लें इसे. Let's add all the chocolate batter into our pan. It's a little thick. चलें, let's place everything. सब कुछ लेवल में कर दें इसके. थोड़ा सा टैप कर लें इसे. दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. ये एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स हैं जो आप इस पर ऐड कर दें. मैंने हाफ कप चॉकलेट चिप्स लिए. My oven is preheated at 350 degrees Fahrenheit. इसे हम 35 to 37 मिनट्स के लिए बेक करेंगे. थर्टी 37 मिनट्स हो गए हैं हमारे. हम एक टूथपिक से इसे चेक कर लेंगे. देखें, ये कम्प्लीटली क्लीन है टूथपिक. बस इसे निकाल लेंगे ओवन से बाहर. लेट इट कूल डाउन फॉर 15 मिनट्स एंड देन वी कैन जस्ट स्लाइस इट एंड सर्व इट. चले, हमारी ये जो ब्राउनी है ये ठंडी हो चुकी है. इसके जो साइड्स के एजेस हैं, एक बार इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से. बस इसी तरह. अब पीसेस जो है वो आपकी चॉइस है, छोटे बड़े. इसके पीसेस भी उसी तरह करने हैं जिस तरह हम केक कट करते हैं. हर एक पीस को काटने के बाद आप नाइफ़ को अच्छे से क्लीन कर लें. आप देख सकते हैं कितनी मॉइस्ट है ये, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर का टॉप इसका. इसको हम आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे जो हो जाएगा सोने पे सुहागा. If you do like this recipe, give a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Thank you.